The first question, a body has a weight 72 Newton when it is taken to a height h is equals to r, that is radius of earth. Okay, so it would weigh how much? It would weigh how much? Options are 72 Newton, 18 Newton, 36 Newton, fourth one is 0. Body has a weight of your how much? 72 Newton. Weight matlab mg. Weight is your mg, that is your 72 Newton. You know that when you take the body to certain height, the formula is g dash is equals to your, this will become for me your g divided by 1 plus h by your r whole square. Okay, is it clear? Now what is given in the problem is h is equals to your r. For h is equals to r, g dash will become for me g divided by 1 plus r by r. H is your r divided by r whole square. This one get cancelled. So 1 plus 1, it will be your g by 2 whole square. That means it will become for me g by 4. Okay. Now what will be the weight at the time? W dash is equals to your m into your g dash. That is equals to mg by 4. That means 72 divided by 4. That will be equal to how much? 18 Newton. 18 Newton will be the answer. Clear, better? Done? Sure. Next question. Find the gravitational potential find the gravitational potential at the center of triangle. Sure. This is your triangle. We are having mass m here, we are having mass m here, and we are having mass m here. All the distances are a, and as well as of your a. Somewhere here, and all the distances are r. This is making an angle of 30 degrees. At point O. Find the gravitational potential at the center of your triangle. Find the gravitational potential at the center of the triangle. At the center of the triangle, it will be equal to how much better? We can use the principle of superposition. V0 will be equal to V1 plus V2 plus V3. Because of the first particle, it is capital G into your M divided by your R minus capital G into your M divided by R minus capital G into your M divided by R. How many times? 3 times. 3 times of your minus common G into your M divided by R. What is the value of R from the figure, beta? So from the figure, if you see right now, this distance will become A by 2. So it is your cos 30 degrees is equals to A by 2 divided by R. A by 2 divided by R.
So cos 30 is how much? Root 3 by 2. That is equals to your A by 2 into your R. 2 gets cancelled. So R is equals to A by root 3. So I can write here potential at your O will be equal to minus of 3 capital G into your M divided by R. R is equals to A by root 3. So root 3 will go up. So potential at your center will be equal to minus of 3 root 3 G into your M divided by your A. Clear, beta? Done. Next question. A satellite circled around the Earth at a distance of 3,400 kilometers. Determine its orbital velocity if the radius of the Earth is 6,400 kilometer. Take G value as 9.8 meter per second square. Satellite is circled around the Earth. This is your Earth. Radius of your Earth. And we are having a small satellite here right now. The satellite is been revolving around this one. Okay. The satellite is circled around the Earth at a distance of 3,400 kilometers. That means the total distance somewhere here, if I'm taking right now, from here to here, this will be equal to your R. R is equals to capital R plus H. From here to here, this is your H. R is how much given for me? 6,400 kilometers plus H value is given as 3,400 kilometers. So that will be 9,800 kilometers. So orbital velocity formula beta V naught is equals to under root of your G into your M divided by your R. Isn't it? So I can write this one as under root of your G into M is G into R square divided by small r. Isn't it? So this one is R outside under root of G by your small r. Root of R square में ना R मैंने बाहर निकाल लिया. तो R की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 6,400 किलोमीटर. सो मीटर्स में लिखोगे तो 10 पावर 3 आ जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई ये हो गया 9,800 किलोमीटर्स. इसको भी आप 10 to the power of 3 में लिख दो. ठीक है ना. अब ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो. देखो कितना आ रहा. ये पॉइंट चले जाएगा. isn't it? So 98 ये बन जाएगा 1000. ठीक है ना. क्लियर है. इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी बताओ.
6,400 किलोमीटर्स है ना बेटा, किलोमीटर्स को हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. दिस विल बी इक्वल टू 9,800 इंटू 10 to the power of 3 मीटर्स आ जाएगा. ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 6,400 इंटू 10 to the power of 3 हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 by 10 to the power of 6. ये बन जाएगा मेरे को 6,400 इंटू 10 to the power of 3. ये रूट में से निकालो तो 10 power 3 आ जाएगा, 10 power 3 10 power 3 कैंसिल, that will be 6,400 meter per second height. डन बेटा. Next question. A satellite is launched into a circular orbit close to the Earth's surface. What additional velocity has nu to be imparted to the satellite in the orbit to overcome the gravitational pull. To overcome the gravitational pull. Question देख लो एक बार जल्दी से. A satellite is launched into the circular orbit close to the Earth's surface. G की वैल्यू आपको 980 लेना पड़ता, अगर नहीं कन्वर्ट करें तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड को आप मीटर्स में किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके कर लीजिए. The satellite is launched into circular orbit close to the Earth's surface. What additional velocity has to be imparted to the satellite in the orbit to overcome the gravitational pull? Additional speed so that it can overcome the gravitational pull मतलब इसको escape करना है बेटा, escape velocity से जा रहा है basically, isn't it? तो मान के चलो when it is very close to the surface of the Earth, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट इज बीन रिवॉल्विंग. ठीक है ना, and it is moving with what velocity beta, v naught. So when it is very close to the surface of earth, v naught is equals to under root of your g into m divided by r हो जाएगा. Yeah, this one is under root of g into capital R, याद है. So to escape वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 2g into कैपिटल R. तो एडिशनल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ी इसको, एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड कितना होगा बताइए. एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकाल दीजिए. सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2g into r, orbital velocity under root of g into r. So this will be equal to root 2 minus 1 into this will be your root 2 g into your r. Common आ गया, isn't it? So root 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.414 minus 1 into root of your g into capital R. रूट ऑफ जी आर मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी 1.414 में से अगर निकाल रहा हूं मैं बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू 0.414. ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी दैट विल बिकम फॉर मी, अगर ये पॉइंट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, so this will become for me 0.414 डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ इसको, इंटू योर 8 आ जाएगा.
isn't it? So ये बन जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए 0144 इंटू 8 देखिए कितना आ रहा 014 into 8 is 3312 beta divided by your 1000, isn't it? So अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखूं तो दिस विल बी 3.312 किलोमीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, डन बेटा। हाँ, एडिशनल वेलोसिटी मतलब देखो बेटा ये ऑलरेडी वी नॉट पे है तो उसके पास ऑलरेडी वी नॉट है, तो यहाँ से आपको कितना वेलोसिटी दिए तो वो एस्केप कर रहा है, तो ग्राउंड पे से जब जाओगे ना तो अपने पास एस्केप वेलोसिटी आता ना बेटा। तो ऑलरेडी मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑलरेडी मेरे पास क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी है बेसिकली ये वाला। तो एडिशनल वेलोसिटी मतलब क्या करोगे, एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू योर एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको कर ले तो कितना आ रहा √2 - 1 इंटू योर जी इंटू योर आर। ठीक है, नेक्स्ट वन the amount of work done on the system if mass m is at c and taken to infinity। okay? यानी अपने पास ऐसा ट्राइंगल है ऑलरेडी, velocity I don't know whether I have taught it for IC2 or not, लेकिन बाकी के सेक्शंस के लिए तो हो चुका है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये हो गया मास m, ये हो गया मास m, ये हो गया मास m, ये हो गया ये हो गया ये और ये हो गया ये। ठीक है ना, अब हम लोग दोनों के बीच में इनिशियली क्या दूरी है बेटा, ये की दूरी है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए कोई। So what will be the initial energy? Initial energy will be equal to your U1 plus U2 plus U3. So that will be equal to your 3 times है ना, 3 pairs बनेंगे, so it will be a minus of your 3 into G into M square divided by your ये। तो फाइनल कहाँ पर जा रहे हैं बेटा अपन, इन्फिनिटी को जा रहे हैं, isn't it? So at infinity हम लोग जब जा रहे हैं right now, so what will be the energy? Amount of work done by the system if the mass m is at your c। ठीक है, ये वाला पार्टिकल जो है ना सी है, ये वाला ये है और ये वाला बी है।
अब हम लोग इस मास को क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी को लेके जा रहे हैं. वी आर टेकिंग दिस मास m टू इन्फिनिटी. अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, U final will be equal to your minus of G into your m square divided by your A. क्योंकि अगर एक चले गया तो बचा खाली दो ही ना बेटा, ए और बी के बीच में रहेगा. यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, तो इन दोनों के बीच में ये है और ये बी है, इन दोनों के बीच में दूरी ये. तो यू फाइनल हो गया दिस मच. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच, वर्क डन बाय योर एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस ऑफ योर यू इनिशियल. वर्क पर एनर्जी में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो बेसिकली, इसलिए सो यू फाइनल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस ऑफ योर जी इंटू योर एम, m square है ना बेटा, g into your m square divided by your a. Minus of minus, this will become for me plus, this will be equal to 3gm square divided by your a. कितना आ रहा है देख लीजिए, -1 plus 3 यानी 2. This is 2 times of g into m square divided by your a. This will be the answer. Clear? Next question. The height at which the weight of a body becomes एक मिनट,